Good afternoon to everybody. Good afternoon. Audio video clear सुबुची कि नहीं कोड के? ओय ओय आठ जन अच्छ गौतम रामराई गुलडा भलेश्वर ओके अच्छा ऑडियो वीडियो क्लियर सुबुची तो खाली एतिक टिके को ऑडियो वीडियो आठ जन अच्छ गौतम ऑडियो वीडियो क्लियर सुबुची कि नहीं को टिके जल्दी जल्दी को फटाफट अच्छा बहुत हो जी क्लियर अच्छा आज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम गुड आफ्टरनून पीतलिप ओके थैंक यू तो देखो आरंभ करिया आज टॉपिक थिला चार्ज फील्ड पोटेंशियल आम आरंभ करवा ता पूर्व किसी कथा मु कहूँ जो तुम एग्जाम आग को अच्छे मार्च कि एप्रिल रे हम नोटिफिकेशन एपर्यंत भी आसीनी नोटिफिकेशन शीघ्र आसीज तो मेन कथा हूँ किसी पिला एवं मन कर एग्जाम तो हम आम पढ़ीनु बट कौन करूँ आउ गोटे मस कि 1.5 मास बाकी अच्छी कौन करूँ नुह कि एमती कहीं भावुच कि जो पिला मैंने भावुच जे एपर्यंत भी आम पढ़ीनु आगु कौन करूँ न करूँ हाँ से लगी मुझे कहूँ जे डोंट वरी अबाउट इट एबे आरंभ कर एबे ठू स्टार्ट कर देख ठीक हो ठीक अच्छे आम जो चैलेंज रे ऑलरेडी अच्छी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन ऑलरेडी दिखाई तो आम ताकू स्टेप बाय स्टेप एवं चैप्टर वाइज आम डिस्कशन करूँ आज आरंभ कलु आज फर्स्ट चैप्टर आम नबू चार्ज फील्ड पोटेंशियल आम क्विक फॉर्मूला आम डिस्कशन करूँ ये चैप्टर उपर एवं या परे आम करिया प्रीवियस ईयर जहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी यही फर्स्ट चैप्टर चार्ज फील्ड पोटेंशियल आम सब डिस्कशन करिया ऑलराइट वन शॉट रिवीजन हम सेमीकंडक्टर केबे हम सेमीकंडक्टर कंटिन्यूअसली चलो यहाँ हो सारा पर सेमीकंडक्टर करिया कंटिन्यूअसली चार्ज फील्ड या पर कैपेसिटर करिया तापरे करंट इलेक्ट्रिसिटी तापर होची मैग्नेट तापर होची अल्टरनेटिंग करंट ईएमआई देन सेमीकंडक्टर एटम न्यूक्लियस देन सेमीकंडक्टर कंटिन्यूअसली चलो ऑलराइट लेट्स स्टार्ट ओके आरंभ करिया तो देख तुमको खाली मु कही दूची बिफोर एग्जाम वर्तमान तुम टे सोशल मीडिया ठारू टे दूरे रहिबो फेसबुक इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो मैंने कर सोशल मीडिया ठारू टिके दूरे रही था पाठ प्रति टिके ध्यान दियो देख ठीक एग्जाम भल हम ऑल द बेस्ट
सो आरंभ करिया देखो प्रथमे चार्ज फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर रे प्रथमे जोटा हम पढिया सेटा होची चार्ज व्हाट इज चार्ज इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर चार्ज ताको हम लिखिया q इक्वल्स टू प्लस माइनस ne q होची चार्ज n होची नंबर e होची चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन गोटे इलेक्ट्रॉन चार्ज केते हुए 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. All right, so this is the charge. तो ये हम जानी छे what is the coulomb force. Coulomb force हम जानी छे जे कौन सी दीटा चार्ज q1 एवं q2 जदि r डिस्टेंस सेपरेशन रे रहइबो ताले ता भितरे force of attraction F is 1/4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square. So this is the force, coulomb force, and the unit of the force is Newton. F is equals to, again we know that q into E, where q is the charge, E is the electric field. All right, E is the electric field, q is the charge. Now here is the what is the electric field? Electric field is a region. Electric field is a region. Suppose consider a point charge is placed at a point and around it a region around which if we bring a charge, another charge, it experience force. So this region is called electric field. Now electric field due to a point charge. Suppose consider here it is the charge q charge, and around this q charge if we bring another charge, it experience force due to that charge, and this. So suppose consider at r distance from the charge q, the point we consider P. At P point we have to find out electric field. Now electric field E will be kq divided by r square. So it will be k is equals to kq divided by r square. So this is the expression. This is the expression of the electric field due to a point charge. All right. This is the electric field due to a point charge. Next, dipole moment. So what is dipole moment? Dipole moment, its unit is coulomb meter. Dipole moment, dipole means actually dipole, it means when two charges separated by two equal and opposite charges separated by a small distance, then this system is called dipole. So what we have to find out here? We have to find out dipole moment. So dipole moment is any charge, because the two charge is equal and opposite separated by small distance. This is the 2L is the small distance. Here this point, this is the O is the dipole center. This is the dipole center. Now minus q to O, this distance is L. Again from O to plus q, this distance is L. So total distance is 2L. Now dipole moment is q into 2L, charge into separation between them. It is the dipole moment. Next, torque. Torque experience due to electric field, it is P cross E. Now we can write it P E sin theta. Next is dipole. Due to the dipole, if we consider a point on the axial point, like here, suppose it is the dipole minus q and plus q. Now if we consider a point on the axial point here, now E axial, here this point is the E axial. E axial, this is 1/4 pi epsilon naught 2p by r cube into p cap. E equatorial kete hobo na E equatorial is equals to 1/4 pi epsilon naught p by r cube. So E axial is equals to 2 into E equatorial. हमें लिखि परिबा E axial is equals to 2 into E equatorial. Next देखो Gauss law. Gauss law होची phi. Phi होची electric flux. Electric flux is equals to
close integration E dot ds is equals to q by epsilon naught. Unit of phi is Newton meter square per coulomb. Newton meter square per coulomb. For infinite charge plane, its application of the Gauss's law. Application of the Gauss's law. Number 1, for infinite charge plate. So it is the infinite charge plate. Now at r distance, electric field E, it is equals to sigma by 2 epsilon naught, where sigma is the charge density. That means total charge contained this plate divided by area. So this is the sigma. So sigma is equals to total charge by area, charge density. This is the surface charge density. Now sigma by 2 epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of the free space. Now E is equals to sigma by 2 epsilon naught. It is the expression for electric field for infinite charge plate. Now here we write the expression of the electric field at a distance r from the infinite charge plate. So in that expression there is no quantity of r, so it is independent of the r. It is independent of the r. Electric field due to infinite charge plate, it is independent of the r. r ऊपर ये depend करना. Next application is infinite wire. So it is the infinite charged wire. So now here is the lambda. Lambda is the charge density. Charge density, that means charge, total charge. Suppose it is the positively charged or negative, whatever be the charge. মনে করো ये হচ্ছে positively charged, তাহলে total charge by length. So এটা হয়ে যাব charge density. So E is equals to lambda by 2 pi epsilon naught r. Okay. Next potential. Potential देखो Q মনে করো এটি গোটে চার্জ ଅଛି r distance রে p point, এই p point রে potential কেতে হবো না potential হচ্ছে K is equals to Q by r. Next A এবং B দুইটা পয়েন্ট, ইয়ার ভিতরে potential difference কেতে হবো? Potential difference V A point রে potential VA suppose consider, at point B potential consider VB. Now VA minus VB, it is equals to KQ by RA minus KQ by RB. So KQ is the common. So now KQ into 1 by RA minus 1 by RB. Now for dipole, potential at axial point. For dipole, potential at axial point, and this is the dipole center, and the P point is located at the r distance from the dipole center. Now V axial, it is equals to Kp divided by r square. Now if we consider this is the dipole center, now if we draw a perpendicular line over this dipole, then this point is the P point. This point is located at r distance from the dipole center. Now at that point, if we wish to find out electric field, so this will be 0. So V equatorial, it is 0. And another expression E is equals to minus dV by dr. Our potential energy expression, potential energy E is equals to K Q1 Q2 divided by R. Again we know V is equals to Q into V. V is equals to U is equals to Q into V. Again we know U is equals to Q into V. Potential energy, charge into potential. Okay. Previous year टिके डिस्कशन करिया. को प्रीवियस ईयर टी क्वेश्चन डिस्कशन करिया.
को तुमर किछि डाउट तुमर किछि क्वेश्चन किछि कमेंट रो को हाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिया मु सेति पई तो वेट करथली मु क्रेजी फ्रेंड प्रीवियस ईयर करिया मु सेति पई वेट करथली जे केही गोटे कमेंट करू 2019 ठारू आरंभ करिया फर्स्ट क्वेश्चन नो जी 2019 First question 2019 the magnitude of force experienced by an electron placed at a point in the electric field is equal to 2019 previous year 2019 so it is the electric field E inside the electric field a charge an electron so here is the electron charge Q is equals to E is placed how much force it will experience the magnitude of the E is equals to what we have to find out E is equals to what electric field E is equals to weight mg so already given in the question electric field E is equals to mg electric field E force experience so F is equals to mg force is equals to mg is given in the question okay previous year करू हमें देखो F is equals to एटा force केते experience करिवो ए charge force केते experience करिवो F is equals to we know that Q into E so F is equals to QE is equals to mg now E is equals to what E is equals to mg divided by Q right answer is mg by Q okay अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्वेश्चन को मु लिखु जी ए टेस्ट चार्ज Q naught is brought from infinity from infinite along the perpendicular bisector of an electric dipole okay work done on Q naught केते हबो 0 नेगेटिव पॉजिटिव कौन हो गो फटाफट करो कमेंट करो देखी आंसर कौन हो गो फटाफट को जल्दी 0 नेगेटिव पॉजिटिव कौन हो जल्दी करो 2019 रे क्वेश्चन पचारिछि ए टेस्ट चार्ज Q naught is brought from infinite along the perpendicular bisector of an electric dipole work done Q naught केते हबो जल्दी वर्क डन केते हबो 0 शांतनु 0 राइट 0 देखो केस होची एमितिका माने करो एटा होची नेगेटिव चार्ज एटा होची पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज ये होची पॉजिटिव चार्ज बाइसेक्टर माने होची ए जा इक्वेटोरियल पॉइंट माने ए जे ता जे
माने डाइपोल सेंटर देकी जदि मु परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करबी ताले एटा होउची दैट इक्वेटोरियल लाइन ए लाइन टाको कुहा जाय कोन कुहा जाय इक्वेटोरियल लाइन दिस लाइन इज कॉल्ड इक्वेटोरियल लाइन तो एई लाइन ऊपर जेकोसी पॉइंट रे पोटेंशियल केते हबो माने कर एटा होउची गोटे पॉइंट ए पोटेंशियल केते 0 पोटेंशियल 0 ताले वर्क डन केते हुए वर्क डन इक्वल्स टू कोन वर्क डन फार्मूला कोन वर्क डन केते हुए वर्क डन W इक्वल्स टू Q इंटू V चार्ज इंटू पोटेंशियल तुमको देइजी टेस्ट चार्ज होउची Q नॉट ताले Q जगह रे बसेबा Q नॉट बट पोटेंशियल केते इक्वेटोरियल लाइन बाइसेक्टर कहि दिस तुमको परपेंडिकुलर ए जा along the perpendicular bisector of an electric dipole perpendicular bisector होउची एटा तो ई perpendicular bisector रे V होउची 0 so work done it will be 0 right answer is 0 very good 0 very good next question 2019 रे देइची जे 2 points in an electric field have a potential difference 5 volt मु लिखि दउची लगी लिखि दउची 2019 आमे करछु मु लिखि दउची सुविधा हबो जो मनन पाखरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि भलो कथा जो मनन पाखरे नाही सेन देखो 2 points in an electric field 2 points in an electric field 2 points in an electric field have a potential difference देइची 5 volt what is the amount of the work done what is the amount of work done what is the amount of the work done in moving a charge in moving a charge of 3 coulomb from one point to another from one point to another जल्दी जल्दी कर दी आंसर कौन हो जल्दी जल्दी करो आंसर कौन हो जल्दी को आंसर कौन हम जहाँ मुझे फॉर्मूला कही से फॉर्मूला देखिए आंसर हम 2 points in an electric field have potential difference दे दीजिए ताले सॉल्यूशन रे हम एमती लिखिबा सॉल्यूशन potential difference V equals to 5 volt potential difference क्या दीजिए V equals to 5 volt 15 joule अच्छा 15 joule देखिए कौन होची देखो इन मूविंग चार्ज 3 coulomb ताले देखो चार्ज देइची केते 3 coulomb ताले तुमको कहि जे व्हाट अमाउंट ऑफ द वर्क डन ताले वर्क डन बार करिया कथा कहिची ताले आमे एक्चुअली न्यूमेरिकल करिवार प्रोसेस हला फर्स्ट ऑफ ऑल कोन डाटा देइची सेटा को हम आगो लिखिबा डाटा देइची v इक्वल्स टू q इक्वल्स टू आगो लिखि पकेबा देन व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट हमको कोन बाहर करिया को पड़िबो ना वर्क डन तो वर्क डन w so w इक्वल्स टू व्हाट लिखियो so w इक्वल्स टू व्हाट ए सिस्टम रा में करिया नाउ एबे लिखिबा वर्क डन और फार्मूला तो w इक्वल्स टू q इनटू v नाउ q केते 3 v केते इनटू 5 so is equals to 15 now 15 देखो एटा होची चार्ज 3 coulomb v होची वोल्ट so this is the coulomb volt 15 coulomb volt माने होची 15 joule all right ओके बहुत भलो कमेंट बहुत बढ़िया कमेंट आसुची पिला माने कोसुचो मु जानि पारुची फार्मूला भी जणे लिखिचो बहुत भलो वेरी गुड तापरे डायमेंशन फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जल्दी जल्दी कर लो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डायमेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जल्दी जल्दी करो डायमेंशन 2019 चलची हमर डायमेंशन of electric potential डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल जल्दी जल्दी करो
जल्दी जल्दी करो फटाफट जल्दी वेरी फास्ट डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल V is equals to we know that W by Q work by charge W जदि Q भी हबो V is equals to W by Q हबो ना तो W होची कोन W होची वर्क तो वर्क इज इक्वल्स टू कोन हबो को फटाफट को जल्दी जल्दी को वेरी वेरी इंपोर्टेंट परीक्षा श्योर आछिबो ए क्वेश्चन श्योर आछिबो तो W इज इक्वल्स टू वर्क M L स्क्वायर T टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय Q माने होची चार्ज होची 80 चार्ज हला 80 नाउ इट इज इक्वल्स टू केते हबो जल्दी जल्दी को M L स्क्वायर T to the power -3 A inverse and we keep it with third bracket Shriya M L square T to the power -3 A inverse right DB status 1 2 -3 -1 right ठीक अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा कहि जी डिफाइन इक्विपोटेंशियल सरफेस का कहया किछ आइडिया अछि व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस ए जे डिस्कशन होउची ना 2019 2018 ए प्रीवियस ईयर रु तमको पाखा पाखी 70% 70 रु 80% कॉमन आजियो 70 to 80% common from previous year रू 70 रू 80% कॉमन आसीओ ऑलरेडी मोर जो यूट्यूब चैनल टा अछि यादरे ऑलरेडी पोस्ट हेची सॉल्यूशन ऑल सॉल्यूशन पोस्ट हेची तथापि मु एडी कर देबी हला कि जोडा बुझाउ किछि असुविधा होजी जो पिला मनकर एई 2:30 एई टाइम टा रहइबो ठीक अछि वीकली 3टा क्लास हबो वीकली 3टा क्लास 3 दिन हबो ठीक अछि हमें एंती चैप्टर वाइज डिस्कशन आम चलियो कंटिन्यूअसली एंती लगातार आम एमती कंटिन्यूअसली चलियो ऑलराइट भोलेश्वर नायक ठीक अछि व्हाट इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस का कहबा इक्विपोटेंशियल कथारो जानी होउची जे पोटेंशियल टा इक्वल हबो इक्विपोटेंशियल सरफेस ए कथारो जानी होउची जे पोटेंशियल इक्वल हबो ठीक अछि तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कार हबो मने करो एठी गोटे चार्ज अछि क्यू चार्ज तो या ठारू आर डिस्टेंस रे एठी जा पोटेंशियल हबो एठी भी आर डिस्टेंस रे सेम पोटेंशियल हबो एठी भी आर डिस्टेंस रे सेम पोटेंशियल हबो ताहले ए आर डिस्टेंस रे मु जदि गोटे सर्कल ड्रा करिवि ताहले एइटा हे जिवो मोर इक्विपोटेंशियल सरफेस गोटे चार्ज अछि ता ठारू आर डिस्टेंस रे माने आर रेडियस रे जदि मु गोटे सर्कल कंसीडर करबी ताले सेही सर्कल टा हे जिवो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो कि नहीं यस और नो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस एबे इक्विपोटेंशियल सरफेस उपरे एई सरफेस उपरे जे कोनसी जगह रे ठीक अछि एई जगह रे मन कर एठी मु गोटे टेंजेंट ड्रा करबी एई टेंजेंट उपरे परपेंडिकुलर हबो एटा एवं एटा हे जिवो इलेक्ट्रिक फील्ड एई पॉइंट रे यदि मु एठी गोटे टेंजेंट ड्रा करबी या उपरे परपेंडिकुलर एटा हे जिवो इलेक्ट्रिक फील्ड एवं एई पॉइंट रे एटा हे जिवो इक्विपोटेंशियल सरफेस ईपीएस मु लिखुची शॉर्टली तो एटा हे जिवो ईपीएस एई पॉइंट रे ईपीएस हबो कोन इक्विपोटेंशियल सरफेस दिस इज द ईपीएस इक्विपोटेंशियल सरफेस या पर जदी परपेंडिकुलर मु ड्रा करबी दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सो क्वेश्चन थिला जे एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ठीक अछि एनी सरफेस that has equal electric potential in each point is called equipotential surface एवं next question थिला जे angle between equipotential surface and lines of force
लाइन्स ऑफ फोर्स मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एवं तमर इक्विपोटेंशियल सरफेस भितर एंगल केते हबो ना 90 डिग्री ऑब्वियसली 90 डिग्री देखो 90 डिग्री दिस इज 90 डिग्री ऑल राइट हाँ कि नहीं गो any surface which has same electric potential at point known as equipotential surface angle between होची 90 degree very good अच्छा तापरे 2019 हला 2020 करिया 2020 2020 first question हला the electric force between two charges लिखि देबी मु the electrostatic force between two charges distance r apart in vacuum is f the force between same charges distance r by 2 apart in a medium of dielectric constant 2 is option 1 f by 2 option 2 2f option 3 f by 4 option 4 4f जल्दी करो आंसर लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कशन करिया लॉन्ग क्वेश्चन करिया शांतनु लॉन्ग क्वेश्चन जदि डिस्कशन करियार अछि करिया किछि असुविधा नहीं मते कमेंट रे कहि दियो जे को लॉन्ग क्वेश्चन गुला डिस्कशन करले भलो हबो लॉन्ग क्वेश्चन तो सिलेक्टिव मु देई छि ना मोर यूट्यूब चैनल रे ऑलरेडी लॉन्ग क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया अछि तमर जदि डाउट थाय जे सर एटी क्वेश्चन हमको टिके डिस्कशन कर दवार अछि सेती क्वेश्चन को हमें अधिका टिके डिस्कशन कर दो मु कसे देबी केमती कोन होउ छि मु डिटेल्स मु कहि देबी ओके 4f बुझियलानी 4f टा माने को क्वेश्चन 4f टा लेंस रगी ओ आंसर 4f अच्छा आंसर 4f ना आंसर 4f तो हबनी आंसर 4f हबनी श्रिया लेखुची 2f राइट 2f हबो आंसर 2f हबो 4f हबनी शांतनु 4f हबनी 2f हबो देखो सॉल्यूशन f is equals to what f is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 divided by r square f is equals to 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square now f dash एटा तो हम जानि छु एटा होची कूलम्स फोर्स होची 1 by 4 pi epsilon naught q1 q2 by r square किंतु f dash केते हबो देखो क्वेश्चन रे कहि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस डिस्टेंस r apart एटा होची f हम लिखि छु द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस ताले q1 q2 चार्ज रहिबो डिस्टेंस ता हिजबो r by 2 and the dielectric constant dielectric is 2
that means 1 by 4 pi epsilon naught. This is the K. This is dielectric 2, that means epsilon r, it is equals to 2 in medium. Now f dash is equals to 1 by 4 pi epsilon r q1 q2 by this is r by 2 whole square. এবার কত দেখি হবে কি না দেখো, এইটাকু আমি কোন লিখিবা ডাইলেক্ট্রিক কনস্ট্যান্ট k is equals to 2 epsilon r মানে হচ্ছে k into epsilon naught, তাহলে 2 into epsilon naught, তাহলে এটা হয়ে যাব 1 by 4 pi epsilon naught into 2, এটা হয়ে যাব উপরে হয়ে যাব 4 q1 q2 by r square, তাহলে এটা হয়ে যাব 2, তাহলে এইটা হচ্ছে আমার f, তাহলে 2f। দেখো বুঝিয়ালাম কি নাই গো, হ্যাঁ 2 স্কয়ার 4 শান্তনু, দিস ইজ r স্কয়ার, এটা হচ্ছে 4, 4টা উপরକୁ আসিবনি, এই যে 4টা উপরକୁ পড়ে আসলা, বাট এইটা যে 2 হবো ইপসিলন r মানে হচ্ছে k ইনটু ইপসিলন নট, ডাইলেকট্রিক 2 দেইছি, তাহলে ইপসিলন r যেহেতু মিডিয়াম ভিতরে ইন এ মিডিয়াম কইছি, তাহলে মিডিয়াম মানে ইপসিলন নট, instead of the epsilon naught we have to write epsilon r. Now epsilon r is equals to k into epsilon naught, k is equals to 2 given in the question. Now at the place of the k we have put 2 epsilon naught, so epsilon r is equals to 2 into epsilon naught, this is 2 epsilon naught, 2 and 4 cut and it will be 2, so 2f is the f dash, new force it will be 2f, ঠিক আছে ওকে। 2020 নেক্সট क्वेश्चन দেইছি, 2020 নেক্সট क्वेश्चन हला যে E axial E equatorial রেশিও কেতে, E axial E equatorial ratio of E axial E equatorial is to E equatorial is equals to what? 1:1, option 2, 2:1, option 3, 1:2, option 4, 1:4। जल्दी गो, आंसर कौन हो, गो जल्दी फटाफट। Shriya 2:1, 2:1 is the right answer, 2:1 হবো তো। E axial এটা কেতে ଆଉ E equatorial, फॉर्मूला को जल्दी को। दीपक स्वाई 2:1, is the right answer, 2:1 is the right answer। টিকে পূর্বরু মু করেছি E axial এবং E equatorial ফর্মুলা করেছি, তো E axial এবং E equatorial या সহিত 2:1। তো নেক্সট क्वेश्चन को पळेबा। कैपेसिटर अछि गॉस लॉ, तबरे 2019 रो गोटे क्वेश्चन अछि, 2019 रो गोटे क्वेश्चन अछि, गोटे क्वेश्चन हमें छाड़ी जाइछु 2019 रो। 2019 रो गोटे क्वेश्चन देइछि, ए रीजन in an electric field is specified by following potential, Vx is equals to A by X plus B, find out unit of AB, find unit of A
एंड बी फटाफट फटाफट करो फटाफट यूनिट ए एंड बी ए बी रो यूनिट फटाफट बाहर करो जल्दी करो फाइंड यूनिट ऑफ ए एंड बी यूनिट ऑफ ए एंड बी फर्स्ट ईयर थिला होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन तो एटा से होमोजेनिटी ऑफ द इक्वेशन और गोटे पार्ट तो देखो एटा होची v टा होची पोटेंशियल और यूनिट कोन फटाफट को पोटेंशियल ताले vx होची पोटेंशियल एट x डिस्टेंस ताले एटी यूनिट नेकी कथावार्ता करिया पड़ियो एटी ओनली यूनिट नेकी कथावार्ता करिया पड़ियो पोटेंशियल और यूनिट कोन हो फटाफट को वोल्ट वेरी गुड वोल्ट यूनिट ऑफ ए वोल्ट मीटर यूनिट ऑफ द बी होची वोल्ट अच्छा देखिया कोन होची ताले v होची पोटेंशियल ताले एटा होची वोल्ट इज इक्वल्स टू एटा x होची डिस्टेंस सो a बाय डिस्टेंस माने होची मीटर वोल्ट को मु v लिखुची ताले v इज इक्वल्स टू a बाय m और a इज इक्वल्स टू vm माने वोल्ट मीटर यूनिट ऑफ a इज द वोल्ट मीटर अगेन b इज इक्वल्स टू सिंपल v तार माने एटा जदी वोल्ट हबो एई यूनिट टा वोल्ट हबो एंड एई यूनिट टा भी वोल्ट हबो वोल्ट प्लस वोल्ट नाउ b इज इक्वल्स टू v and a is equals to volt meter all right so next question को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा 2018 2018 क्वेश्चन टा बड़ अच्छी आंसर टा हूँ बहुत सहज है कही ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज क्वेश्चन जदि जहाँ पाखे अच्छी देख ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉइंट चार्ज एट ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ डायमीटर ए मु ड्रॉ कर दूची क्वेश्चन अब लिखिबिनी ड्रॉ कर दूची ठीक है ना क्वेश्चन एवं आंसर सबू किंतु चैनल रे मिल जिवो प्लेलिस्ट रे मिल जिवो CHSE 2022 प्लेलिस्ट रे मिल जिवो तुमको क्वेश्चन एवं आंसर 2018 ठीक अछि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आउ थरे बुझंतु कोउटा आउ थरे कोउटा बुझेबी आउ थरे कोउटा बुझेबी किसको ओके देखो कमेंट मते कहो आउ थरे कोउटा बुझेबी देले मु ताको बुझेबी पुनी आउ थरे 2018 रे जो क्वेश्चन टा कहिची जे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज एट ए सेंटर ऑफ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ डायमीटर a तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हम गोटे नबा एटा होची स्फीयर ठीक है ना जार डायमीटर टा होची a 2018 रे देजी हला a तापरे कहिची जे 10 to the power 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू इट इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi is equal to देजी 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम एति की अमाउंट रो फ्लक्स बाहरुची थ्रू इट एडी ताले चार्ज अछि एट द सेंटर रे चार्ज अछि कोइ जी कीपिंग द पॉइंट चार्ज एट द सेंटर ए पॉइंट चार्ज ताकू सेंटर जति रखी की हां द गॉसियन सरफेस इज चेंज टू क्यूबिकल गॉसियन सरफेस तार माने ये
जेमती स्फीयर थिले स्फीयर या मु चेंज कर देबी शेपटा देई कहूची जे क्यूबिकल या जदी मु एमती क्यूबिकल कर देबी ओके जदी एमती क्यूबिकल मु शेप देबी ताहाले एमती क्यूबिकल शेप कर देबी ताले कोन होबो of the side A the flux to the new Gaussian surface will be फटाफट को so Gaussian surface is independent of the size and shape. Gaussian surface ठीक है जी independent of size and shape. What is the size or what is the shape तापरे किसी डिपेंड करे ना देखो एटा होची गोटे स्फीयर एटा होची स्फीयर हला मन रखो एटा होची स्फीयर तले या सेंटर रे चार्ज अछि हां एवं एटा होची a होची रेडियस ताले फ्लक्स phi is equals to what q divided by epsilon naught. Epsilon naught is the permittivity of the free space, q is the charge. एबे ए शेप टा को जदि मु एमिति नेबी शेप टा एमिति क्यूबिकल हला ताले एठी जदि चार्ज रहइबो q जार एटा होउची a माने आर्म गुला होउची a ताले एठी भी phi is equals to भारिबो q by epsilon naught माने फ्लक्स किसी चेंज होबोनी काहे कि number of the flux माने होउची number of the field lines. Flux means number of the field lines. Number of the field lines passing outward from this q charge is, as for example, this is number of the field line. Field line this is माने करो चारिटा लाइन बाहरची चारटा लाइन बाहरची तो याकू मु एमती गोटे स्फीयर नै छी कंसीडर करिछि जदि मु याकू जदि क्यूब कंसीडर करबी तले एठी भी तो सेही चारटा लाइन बाहरिबो ना होगी एठी भी तो सेही चारटा लाइन बाहरिबो ताले फाइर किसी चेंज हला कि फाइर किसी चेंज हलानी काहे कि फाइर किसी चेंज हेनी ना गॉसियन सरफेस इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज एंड शेप एठी जे जेतेगुला से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर करूची लाइन फील्ड लाइन बाहर करूची एठी भी सेही सेठी की फील्ड लाइन बाहर करिवो बट आमे ए स्फीयर यार इंस्टेड आमे एठी कंसीडर करिजु गोटे क्यूब सो phi is equals to q by epsilon naught also एठी phi भी q by epsilon naught होबो तो ऑलरेडी phi is equals to देइथला 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर स्फीयर पई की यदि क्यूब होबो ता पई की भी phi is equals to केते भारियो 10 to the power 6 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भारियो सेम रहइबो सेम ठीक अछि चेंज होबनी अच्छा तो नेक्स्ट आ गोटे देखो पोटेंशियल ऊपर आ गोटे न्यूमेरिकल काली 2:30 रे क्लास हबो हो कि नहीं ये कमेंट करी मते को काली 2:30 रे क्लास हबो कि समस्त जदी जॉइन करिवो तो काली हम आरंभ करिया 2:30 रे हला ठीक है कमेंट सेक्शन में कमेंट करी मते को जे काली 2:30 क्लास हबो कि नहीं जदी कहबो ताले काली पुनी आरंभ करिया ओके पुनी प्रीवियस ईयर को हम सरिया राजेश महापात्र काली करिया तो ओके 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 ठीक अछि काली करिया तो एटा आउ दुईटा क्वेश्चन करेबी दुईटा क्वेश्चन टिके खाली वेट करो आउ दुईटा क्वेश्चन तो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट मु लिखु जी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एई क्वेश्चन गुला जहा करौ जी एई क्वेश्चन गुला को खाली कोसिकरी जाओ परीक्षा रे तमे 70 to 80% कॉमन पाइबो श्योर क्वेश्चन श्योर 70 को थ्रू 80% कॉमन श्योर पाइबो ठीक अछि जेति की प्रीवियस ईयर मु करौ जी सेति खाली तो जदी कोसिकी जीवो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point at a distance 2 meter from a point charge
charge of 0.1 microcoulomb is 450 volt. The electric field at this point कौन हबो को इलेक्ट्रिक फील्ड ई केते हबो को से पॉइंट रे ई केते हबो जल्दी जल्दी बाहर करो मते जल्दी जल्दी सर एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करिया सर प्लीज ओके 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 बोले सर नायक एमसीक्यू तो करिया ऑब्वियसली करिया ई तो एमसीक्यू ये तो एमसीक्यू এই क्वेश्चन एमसीक्यू हे जिवो এই क्वेश्चन चारटा ऑप्शन हे जिवो हला कि এই क्वेश्चन मु चारटा ऑप्शन दे दूजी एक नंबर ऑप्शन 220 न्यूटन पर कूलम दुई नंबर ऑप्शन 210 न्यूटन पर कूलम हला तीन नंबर ऑप्शन हला 225 न्यूटन पर कूलम चार नंबर ऑप्शन हला 230 न्यूटन पर कूलम को एमसीक्यू हला भलेश्वर नायक एमसीक्यू क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करबा ई तो एमसीक्यू इट तो एमसीक्यू हला जहा करौजी इटा तो एमसीक्यू फटाफट गो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट डिस्टेंस 2 मीटर फ्रॉम ए पॉइंट चार्ज मन कर एटा होजी गोटे पॉइंट चार्ज एटा होजी गोटे पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस 2 मीटर तले या थारो 2 मीटर डिस्टेंस रे पोटेंशियल v देइछि केते ना 450 वोल्ट एवं एई चार्जटा इक्वल्स टू देइछि 0.1 माइक्रो कूलम ताले वी नो दी फॉर्मूला आज भी आमे मुसे फॉर्मूलाटा मु लिखिछि जे E इज इक्वल्स टू dv बाय dr सो इज इक्वल्स टू v बाय r मु लिखुछि dv बाय dr ताले पोटेंशियल माने होउछि पोटेंशियल डिफरेंस ताले डिफरेंस माने होउछि 450 एंड r केते r होउछि 2 मीटर बाय 2 सो इज इक्वल्स टू 225 न्यूटन पर कूलम और यार आउ गोटे यूनिट अछि वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम और वोल्ट पर मीटर सो एई ऑप्शन न्यूटन पर कूलम हेई पारे बा वोल्ट पर मीटर भी हेई पारे ओके न्यूटन पर कूलम ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा अच्छा एठी गोटे बहुत बढ़िया क्वेश्चन लिखी जे ए स्टूडेंट सेड दैट पॉसिबल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जूल कूलम इनवर्स और मीटर इनवर्स हला बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखो कहि छी जे इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड केते यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड देजी जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स एटा की यस और नो हां कि ना यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एटा यस और नो हला जदी यस केमिति जदी यस ताले केमिति जो मैंने आज कमेंट करूछो जो मैंने आज क्लास करूछो बहुत बढ़िया तुम कमेंट करूछो बहुत बढ़िया फीडबैक तुमठू मिलुजी तो ठीक अच्छे आम या कंटिन्यू करिया काली भी आम क्लास कंटिन्यू करिया 1 आवर ऑलरेडी हो जाइए सो ठीक अच्छे आज ये रखिया नेक्स्ट क्लास पुणी काली 2:30 है 2:30 PM समस्त रेडी होगी तुम तुम सांग सब लिंक टाक शेयर कर देथिबो पूर्वरु जे 2:30 माने 2:30 आरंभ हो एवं आ गोटे कथा जो मैंने न्यू अच्छो से मैंने चैनल टाको सब्सक्राइब कर रखो आउ रेगुलर आम एमती डिस्कशन करिया रेगुलर लाइव क्लास रे आम आसिया 2:30 पर डे ओके आ तुम जहाँ जहाँ असुविधा आमर व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी व्हाट्सएप ग्रुप रे तुम जन पार बा कमेंट सेक्शन तुम जन पार ओके तो देखो यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड जूल कूलम इनवर्स मीटर इनवर्स ये ठीक ना भूल ये होची राइट बिकॉज E इज इक्वल्स टू व्हाट न्यूटन पर कूलम जूल होची कौन जूल वर्क डन होची जूल तो वर्क डन माने होची वर्क माने कौन फोर्स जे कौन सी बॉडी ऊपर जदी फोर्स अप्लाई करिया एवं ता जदी डिस्प्लेसमेंट हबो ताले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होची वर्क डन ताले फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स माने होची न्यूटन डिस्प्लेसमेंट माने होची मीटर ताले न्यूटन मीटर जूल माने होची न्यूटन मीटर ताले
जूल माने होउची न्यूटन मीटर वर्क डन माने होउची जूल अगेन वर्क डन माने होउची फोर्स इनटू डिस्टेंस ताले फोर्स इनटू डिस्टेंस माने होउची न्यूटन मीटर तार माने होउची जूल ताले जूल माने होउची न्यूटन मीटर ताले न्यूटन जगह रे मु कोन लिखिबी जूल पर न्यूटन माने 1 न्यूटन माने जूल पर मीटर ताले जूल पर मीटर इनटू कूलम कूलम as it is so now it is equals to joule coulomb inverse meter inverse so the student write joule coulomb inverse meter inverse is the unit of the electric field he is right magnetic effect current ro note टिके दियंतु magnetic effect current ro note group रे मिल जिवो आज इवनिंग रे मिल जिवो ऑल राइट तो आज एतिके थाउ काली 2:30 रे पुणी क्लास करिया समस्ते रेडी हे कि थिवो ऑल द बेस्ट टाटा।